हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बी एन बाय आईएएस। वेलकम टू द मिशन मेंस सीरीज, जहां पर हम आंसर्स आंसर राइटिंग फॉर मेंस is being looked at, right? So this is what our primary aim is. In this series I have already made some videos, you can go and watch them. Now in this particular session let us look at a question from GS paper 2. See, GS paper 2 में हम polity section touch किया है, but so far we did not touch IR section, so that is why I am bringing this particular question for today's discussion. सी, आज का क्वेश्चन में हम क्या डिस्कस करेंगे? सी, इट इज ऑल अबाउट संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्रिटिकली एग्जामिन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एससीओ। व्हाट इंपॉर्टेंट डज इट होल्ड फॉर इंडिया? सी, 2021 में पूछा गया है 15 मार्क्स के लिए। वी हैव टू राइट इट इन 250 वर्ड्स। सो लेट अस लुक एट हाउ टू अप्रोच। सबसे फर्स्ट देखो स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर। इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? वी विल राइट अबाउट एससीओ एंड इट्स एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, राइट? से एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को इंट्रोडक्शन के साथ साथ लिंक करके लिख लेंगे एंड देन बॉडी पे उसका क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। देन बॉडी पे वी विल आल्सो कीप द इंपॉर्टेंस ऑफ इट। ठीक है, सो यहाँ पर क्रिटिकल एनालिसिस विद प्रॉपर एग्जांपल्स प्लस द इंपॉर्टेंस ऑफ इट, इंपॉर्टेंस ऑफ एससीओ फॉर इंडिया। ठीक है, ये वाला रखेंगे। सो दिस इज अवर बॉडी पोर्शन। देन कंक्लूजन पोर्शन में क्या करना होगा? थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक सेंस में करेंगे। इवन दो we are having some issues in this organization because of the presence of some rivals, but here we will be concluding it by highlighting its actual potential for economy, growth of economy or security policy, investment or international relations or stability in the central Asian region or energy security, काउंटरिंग टेररिज्म। ये सारे पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए वी आर गोइंग टू कंक्लूड इट। ठीक है, सो दैट्स द approach to this particular answer. So let us look at the actual answer. See, यहाँ पर brief introduction about Shanghai Cooperation Organization. It is intergovernmental organization founded in Shanghai. Actually, it is led by China, but other country members are also there. Initially, China plus some of these Central Asian countries, then Russia added. Then India and Pakistan joined in 2017 and latest member being Iran. ठीक है, एज ऑफ नाउ दिस इज द मेंबरशिप ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। देखो एग्जाम, आईआर के एग्जाम्स जब लिखते हैं तब मैप्स को यूज करना बहुत ही जरूरी है। इफ यू पुट इट इन द मैप फॉर्मेट, इवन अगर एज इट इज मैप नहीं है, बट इफ यू मेक द स्कीमेटिक एंड मेंशन द कंट्रीज नेम, इट विल बी रियली गुड। ठीक है, सो अब यहाँ पर इसका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। सबसे फर्स्ट देखो, स्ट्रेंथनिंग द रिलेशंस। जो अमॉन्ग द मेंबर्स जो है उनके बीच में रिलेशंस को बढ़ाना है एंड बाय डीपनिंग द पॉलिटिकल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, दैट इज वन ऑफ द मेन एम। सेकेंड जो है, सी टू स्ट्राइव टू हैव joint cooperation for countering terrorism, extremism and separatism in this entire region and also fight the global terrorism. Then third aim जो है, that is to develop democratic and equitable international political order. Fourth है ensuring the joint efforts for maintaining peace, security and stability in the region. particularly central asian region जो है थोड़ा सा unstable होता है, so उस particular region में। Then going to the next one, to deepen the engagement in the field of trade or commerce, transport, tourism, etc. इसमें we need to increase the engagements. Those are the main objectives of Shanghai Cooperation Organization. So quickly I'm summarizing it. What we have seen in the introduction, we have looked at the Shanghai Cooperation Organization, brief introduction about it, then uska aims and objectives. That's what we have seen it. Now let us go and do the critical analysis of these aims and objectives. सबसे first देखो, यहाँ पर first aim क्या था? स्ट्रेंथनिंग अवर रिलेशंस, बट इज इट एक्चुअली हैपनिंग? देखो यहाँ पर दो मेंबर्स है, पाकिस्तान है, चाइना है, जिनके साथ इंडिया का रिलेशंस इतना अच्छा नहीं है एज ऑफ नाउ। ठीक है, वी आर हैविंग अ स्ट्रेन्ड रिलेशंस बिटवीन दीज टू विद दीज नेशंस। सो ऑब्वियसली फर्स्ट एम जो है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है, वहां पर थोड़ा सा कम हो रहा है। एंड एक और चीज देखो, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है। जैसे इंडिया का इंटरेस्ट कुछ अलग है, पाकिस्तान का अलग है, चाइना का अलग है, रशिया का अलग है, जो मेन की प्लेयर्स है यहाँ पर। एज ए रिजल्ट ऑफ इट, इट हैज बिकम ए कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल तालिबान का केस ही ले लो, अफगानिस्तान का। सी, इंटरेस्ट ऑफ इंडिया आर डिफरेंट एंड पाकिस्तान का अलग है, रशिया एंड चाइना का अलग है। सो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट की वजह से वी आर नॉट हैव no, it is not possible to have the cooperation until
and unless we sit and delegate and discuss about these interests and come to a point, right? So that is first thing. Second है कि leader is not taking the lead. See यहाँ पर जो mainly China जो leader है, so it is not committing to the objectives and the aims of the SCO. One of the aims जो है that is cooperation and strengthening the relations. This is the main aim. Look at this. See, one is, see, look at this. One of the main aims is strengthening the relations and like bringing the political order, like stability and international political order. ये सब लेकर आना, maintaining the peace. But look at China. What China is actually doing now. See, it through its checkbook policy, wolf warrior diplomacy, and even human right violations. अगर बात करेंगे तो यहाँ पर examples आप Uyghurs को दे सकते हो. See, Uyghurs एथनिक माइनॉरिटी जो है वहां पर, इसको लेकर इंटरनेशनल कम्युनिटीज में काफी क्रिटिसिज्म मिल रहा है चाइना को. एंड अगेन टेक द एग्जांपल ऑफ हांगकांग और वियतनाम. ठीक है, सो एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दिस, ठीक है, ताइवान इज अनदर वन. एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दिस there is a serious question on Chinese commitments to the aims and objectives of SCO. ठीक है, दैट इज सेकेंड प्रॉब्लम. थर्ड प्रॉब्लम जो है वेस्टेड इंटरेस्ट. जैसे यहाँ पर कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है, यहाँ पर कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट भी है. फॉर एग्जांपल चाइना का ले लो. से मेन चाइना का जो मोटिव जो है यहाँ पर, अंडर द डिस्गाइज ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन, व्हाट इट इज डूइंग, इट इज इंक्रीजिंग इट्स प्रेजेंस एंड पुशिंग इट्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. ठीक है, उनका वन बेल्ट वन रोड वाला इनिशिएटिव जो है उसको पुश कर रहा है. इट इज स्प्रेडिंग इट एंड इट इज नो putting money through this economic cooperation ties के रूप में, it is putting the money into these infrastructure projects just to reach its goal of BRI. ठीक है, so that is a vested interest. Obviously it goes against the aim and objective of it. Similarly, terror financing and support. See, Pakistan, we know there are like proofs as well that Pakistan has been supporting the टेरर फाइनेंस और टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंस एंड सपोर्ट. ठीक है, ये वाला हमें पता है, काफी प्रूफ्स भी है. इवन इंटरनेशनल फाइनेंशियल टास्क फोर्स जो है, एक्शन टास्क फोर्स जो है, that is also having the same. ठीक है, that's the reason why Pakistan has been kept in the grey list. ठीक है, अब देखो उसके साथ साथ अब चाइना भी इनका रोल में आ जाएगा बिकॉज ऑफ इट्स इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान. अब वहां पर तालिबान रिजाइम आया है. ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ इट जो मेन पर्पस होता है, मेन एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द एससीओ होता है, दैट गेट्स डिफीटेड. से यहाँ पर एक सेपरेट विंग, एक सेपरेट मैकेनिज्म भी डेवलप किया है टू काउंटर द टेररिज्म. बट बिकॉज ऑफ दिस वो वाला एम और ऑब्जेक्टिव जो है वो डिफीट हो रहा है. ठीक है, एंड पर्टिकुलरली द करंट सिचुएशन इन अफगानिस्तान, सो इट आल्सो पुट्स दिस पर्टिकुलर वन इन द jeopardizing situation. Next, limited developmental cooperation between the member countries, particularly during the COVID times, जहां पर ज्यादा cooperation की जरूरत था. सी, अंडर द टाइम्स ऑफ लाइक अनफोर्सिन सिचुएशन जब आता है, जैसे पैंडेमिक हो गया या कोई भी डिजास्टर हो गया, उस टाइम पे ज्यादा कोऑपरेशन होना चाहिए. बट उस टाइम पे यहाँ पर कोऑपरेशन बहुत कम हो गया था. ठीक है, देयर वाज अ वेरी लिमिटेड कोऑपरेशन. So that doesn't show that you are going with your objectives and aims, right? So these are all some of the shortcomings which we need to immediately address, which we need to look at. Particularly the leading countries, China and Russia, India, they have to sit and talk about these particular issues. Now, apart from this, we need to write another thing, that is the importance of SCO for India. See, then you might say, why did we join in 2017? Because a lot of importance is there for that region. See, it is part of India's stated policy of pursuing this multi alignment. Pehle hum non alignment pe tha, but now we are going for this multi alignment, and we wanted to have the multipolar world where the power dynamics are not concentrated in one particular country. ठीक है, so we are having this policy which is going in line with the aims and objectives of SCO, so it is necessary for us. Second thing है, to counter the terrorism which is been a headache for India. We have been suffering a lot because of this terrorism, and one of the goals and aims, objectives of SCO is to completely reduce global terrorism. So it is going in line with it. Plus ये जो instability है particularly उस particular
सेंट्रल एशिया रीजन में, उसको कम करना है, वहां पर स्टेबिलिटी लेकर आना है. एंड वी हैव इंटरेस्ट इन सेंट्रल एशिया एज वेल बिकॉज it has lot of energy resources which can be useful for India, and India is hungry for these energy resources because हमारा एनर्जी सिक्योरिटी को प्रोवाइड करने के लिए वी नीड दोस रिसोर्सेस. ठीक है, तो यहाँ पर एंड सिमिलरली यहाँ पर एक पर्टिकुलर विंग है विच आई वाज टॉकिंग अबाउट, रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर जो है, इट कैन बी अ की प्लेयर इन कंबैटिंग द टेररिज्म पर्टिकुलरली फॉर इंडिया. ठीक है, देन अनदर थिंग इज इंडियाज प्रेजेंस इन एससीओ विल हेल्प इंडिया its aim of link itself with the larger Eurasian region क्योंकि it is a gateway, you can say a gateway to Eurasia and to Europe via this north south corridor. ठीक है, so that is another thing we are heavily investing into this as well. We have already put more than $2 billion in Chabahar port, but वहां पर भी sanctions, ईरान के ऊपर sanctions लगने की वजह से that got stalled. ठीक है, सिमिलरली वी हैव इन्वेस्टेड हेवीली इन अफगानिस्तान. ठीक है, वहां पर मतलब रोड्स वगैरह बनाया, जरांग जलारम रोड बनाया है, डैम्स वगैरह बनाया, गुड रिलेशंस मेंटेन किया, बट ऑल ऑफ ए सडन देयर इज एन eruption ऑफ तालिबान regime there with which we do not have very good history. ठीक है, सो दैट इज अनदर चैलेंजिंग पॉइंट एज ऑफ नाउ. सो अगर यहाँ पर अच्छा रिलेशन मेंटेन करके हमारा जो इन्वेस्टमेंट्स है उसका बेनिफिट्स रीप आउट करना है, वी नीड एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक एससीओ टू टॉक टू दोस पीपल. लाइक तालिबान के साथ भी एक पीसफुल टॉक्स में आकर वी कैन हैव like we can reap the benefits of whatever the investment that we have done. So for that, SCO is going to be a very important one. Then next one is its membership will help India, which is currently boxed like in South Asian region, to have a major pan Asian, to become a major pan Asian player. Actually अभी तक देखो हमारा रीच जो है साउथ एशियन रीजन, और एग्जैक्टली भी बात करना है तो सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीजन पे ज्यादा है. अभी साउथ ईस्ट एशियन पे वी आर स्टिल trying to increase our role there. So under these circumstances अगर एशिया पे, पूरा एशिया पे एक बड़ा सा रोल प्ले करना है to become a major country, we need access to each and every country, and we need to be a very active member in all the organizations, right? So वहां पर SCO का membership जो है, it is going to be a key player. Then another thing है कि it can play vital role in deepening the people to people engagement, particularly people to people relations. Already we have a very good no, what you can say, very good command with respect to our soft power. ठीक है, we have very good cultural ties, very good people to people relations. Now if this increases, we can enhance our bilateral relations to the next level, even up to strategic level, or even further beyond this strategic level as well. ठीक है, for that we need this, we need an organization, and in all these cases SCO can play a very important role. But for this to happen, it has to, like all the members, particularly the leading nations, has to adhere to the aims and objectives of the SCO. That is the main need. Now इसको conclude कैसे करेंगे? See, its relations with it, it has the enormous potential to go for like economic development or to ensure the security. Particularly अगर जो टेरर को कम कर देंगे, टेररिज्म को कम कर देंगे, और इंटरनल सिक्योरिटी एंड बॉर्डर सिक्योरिटी विल एनहांस इनॉर्मसली. जहां पर हम खर्च कम करके वी कैन फोकस ऑन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स. ठीक है, दैट विल बी अ ग्रेट नो way forward for us. Then policy and investment, ट्रेड, कनेक्टिविटी, पर्टिकुलरली यूरेशिया, यूरोप के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं हम, एनर्जी सिक्योरिटी, कैपेसिटी बिल्डिंग, इन सब में बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है. ठीक है, however these benefits from SCO will be limited due to the role of China and Pakistan in this organization, because every place they are going against the interests of India, or at least countering or halting, deliberately delaying. तो अब यहाँ पर अगर इसका बेनिफिट्स को रीप करना है तो what is the way forward? The way forward is dealing with this, like using our diplomacy, our soft power, and like ensuring that active role, and dealing with the neighbors, like for example China and Pakistan के साथ भी डील करके एक अच्छा टोन पे we need to establish there as a active member. Then the the position of India with respect to these Central Asian countries will improve, and we will have access to these Central Asian countries. ठीक है, so अभी हम बाईपास करके पाकिस्तान को बाईपास करके जा रहे हैं.
So if we can lead to that position where the talks goes well and the relations goes well, even we can have the access to Central Asia either through China or Pakistan. Okay, but of course that is very much optimistic, but why not? It is possible. We can have that optimistic conclusion as well. So that's how we can conclude it here. So that's it for this particular session. I hope it is useful. अगर कोई डाउट है तो you can put it in the comment section. So that's it for this particular session. Thank you very much, guys, and please like it if it is useful to you, and subscribe to the channel. See you in the next session with another questions approach. Till then, take care. Bye everyone.